video profile resume is coming on your way, so you must be create this so that you should be stand out from the crowd among other job applicants, because nowadays job portals are flooded, overcrowded over that. So your profile must be the unique or stand out from the other job seekers, so that's why you would be the top one or top two in that market in the job seekers list. So let me show you a few points that will help you a lot. Okay, the ideal length it would be a 60 second to 90 seconds. It's depending on your working experience, on your what type of role and responsibility you have. For example, if you are a fresher, from 60 seconds to 75 seconds, it would be a great length for you. You can say your trainings, your dreams, or in the just like future plans in which you are working, or the technology in which you are working. From just like 2 year, 3, 7, 8 year, these are the just like 60 to 90 seconds ideal. And for the person who have more than 10-year experience and even have too much role and responsibilities to mention, so then he can be or she can be just like extend from 95 or 100 seconds, but not that much, because this is the ideal length for that point of view. And that would be a game changer if you are within this one, within this time slot, within these seconds, you will finish all the points that you want to say, that you want to deliver in the proper way, concise and crisp descriptive way. ओके, हाउ टू शूट। आप क्या कर सकते हो, अपना कैमरा जस्ट लाइक आप सेल्फी ले सकते हो अपने फोन से, लाइक दिस वन। आपको वो बैक कैमरा से किसी को बोल सकते हैं कि मेरा फोटो शूट कर दें, इन द सेंस मेरा रिकॉर्डिंग कर दें, मेरा हेल्प कर दें। आइदर थर्ड वन की आप कोई स्टैंड ले लें, उस स्टैंड पे अपना कैमरा लगा दें और उससे रिकॉर्ड कर लें। बट जो आई कांटेक्ट है वो आपका कैमरे के फ्रंट पे होना चाहिए, जिससे ऐसी फील नहीं आए या ऐसी फील नहीं आए या ऐसी, इट शुड लुक्स लाइक द फ्रंट ऑफ योर आईज। Okay, so this would be the good gesture. If you are just like recording, this would be good. This would be just like decent to look for HR or for the talent acquisition teams. Why? This is a major question. Why we should use video resume? Correct? Your personality, your how to talk, communication, expression, how much confident you are about yourself. Or I can say, I'm talking to you, or you are, I can say, in HR, or the person who is seeking talent for their project, for their company, their employer. So you must be aware about you, okay, how I can just like handle those problems whenever I'm discussing with teams, with my client, with other project members, or just like cross projects. So the way of discussion, I am on confident or I am feeling hesitant, the way of delivery, the way of pronunciation, the other points that looks like I'm feeling confident or not, or how I'm talking, how is my personality is acting at that time when I am saying something, I'm communicating, I'm talking to someone. These are the major points. Once you are showing or sharing with recruiters your resume, they are finding that one. If you are good in these points of view, you are wrong. Your resume will do super duper things for you. Your resume will help you a lot to shortlist your profiles, will interview and got offer letter. That much will help you. Okay. डिफरेंट फ्लेवर, आई मीन कि अगर आप मान लीजिए आपका जो ऑलरेडी पेपर रिज्यूमे है, जो आपका सॉफ्ट कॉपी आपने बना रखी पीडीएफ फाइल, उसका जो कंटेंट है उसमें जो आपने वर्क, अपने प्रोजेक्ट जो भी आपने मेंशन कर रखा, वो इस रिज्यूमे में नहीं होना चाहिए। इट वुड बी टोटली डिफरेंट जो आपका उसमें है। ओके, आप वही पॉइंट यहाँ मेंशन करोगे जो आपने उस पेपर रिज्यूमे में नहीं कर रखे। आप वही वर्क पॉइंट्स, सर्टिफिकेशंस, व्हाट यू आर डूइंग डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम योर डेली रूटीन, वो चीजें यहाँ पे करो। और जितना हो सके क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस टेक्नोलॉजी में आप जा रहे हो, जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, उसके बारे में कि वी आर डूइंग दिस एंड आई एम डूइंग दिस, वी आर हेल्पिंग ऑन दैट वन, लाइक दिस। ओके, स्टार्ट होता है कि कब और क्या बोलना।
फर्स्ट जो 10 सेकेंड्स है फ्रॉम 0 to 9 और 0 to 10, आपको शॉर्ट और क्रिप्स अपना इंट्रोडक्शन रखना। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप कुछ भी बोले जा रहे हो। आप 10 सेकेंड्स में, विद इन 10 सेकेंड्स आपको अपना इंट्रोडक्शन देना, आपका नाम, आपका जस्ट क्या कहते हैं कि एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या प्रोजेक्ट में स्पेशलाइजेशन, समथिंग लाइक दैट, कि वो आपको इंटरेक्ट करें, रिलेट करें और आपको आगे सुनना चाहे 10 सेकेंड्स के बाद। 11 to 20, आप आज की डेट में कर क्या रहे हो, आप कौन सा प्रोजेक्ट हो, कौन सी आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर आप फ्रेशर हो या आप अभी जॉब ढूंढ रहे हो, आपके पास जॉब नहीं, तो अभी आप स्पेशलाइजेशन क्या कर रहे हो, लाइक आप कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो, आपको कुछ नई टेक्नोलॉजी लर्न कर रहे हो, कुछ नया ऐसा कर रहे हो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फुलफिल हो रहा हो, या आपकी जो डिजायर्ड जॉब है, आपकी जो ड्रीम जॉब है, उससे रिलेट कर रहा हो। जिससे क्या होगा कि आप उनको शो कर पाओ कि you are trying to explore himself or herself, or are trying to just like upgrade yourself, okay, and that is good for them. Then they will show interest more and more. How are you passionate about your, what is your aspiration, मतलब आप अपने आप को just like after few years यार, or right now in which stage you are right now, just like I was once, I was working as a developer, as a DBA. I was crystal clear, okay, I want to become a architect in SQL. So either I was developer, either I was DB, always I was working on that, and that point just like passionate about that. I held in every area of SQL. It could be development, it could be performance, it could be DB. So that is like you, in which area you are going and in which you are going to expert, make the just like expert on that field. So or what you are learning, that is just like able to help to company, project or client. So these things you should be mentioned. So that is also a helping point. प्रैक्टिकल एक्सपोजर की अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, तो आपने अब तक हैंड एक्सपोजर क्या, आपने किस प्रोजेक्ट पे क्या काम किया और क्या वैल्यू ऐड की। कोई 10 सेकेंड्स में या 20 सेकेंड्स में, 15 सेकेंड्स में आप कितना बता सकते हैं, तो उनको कंसाइज करो कि आई डिड दिस थिंग्स एंड विद द हेल्प ऑफ दिस I help just like reducing these number of tickets repetitive, or I add value so the cost of the project got ramp just like down, or these things, those are showing in numbers, not just like only the words. So number is more valuable. So try to show those type of experience, those type of working style, what you did so far. This would be within 20 seconds. Okay. इसके अलावा है कि आप जो एम्प्लॉयर है, जो आपको हायर करेगा, आप उनके लिए आउट ऑफ द बॉक्स क्या देने वाले हो, मतलब क्या ऐसी वैल्यू ऐड करने वाले हो जिसके लिए वो आपको हायर करें, दे शुड इन्वेस्ट ऑन यू। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी कोई नया सर्टिफिकेट कर रहे हैं, या अभी मार्केट में कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एसक्यूएल डीबी हूँ, मुझे एजर क्लाउड भी सीखा, क्लाउड में भी नई नई चीजें आती जा रही हैं, वो सीखने से क्या होगा कि मैं जो चीजें हैं, जो टास्क हैं, जो रिपीटेटिव टास्क है, उनको ऑटोमेट कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग डाउन कर सकते हैं। तो मैं वैल्यू क्या ऐड करूंगा कि वो कंपनी मुझे 50 लाख 60 लाख देगी, तो मैं उनका 2 करोड़ की वैल्यू क्या ऐड करूंगा। यू गॉट इट, कि व्हाट आई विल डू आउट ऑफ द बॉक्स, दे शुड हायर मी, व्हाट इज माय यूनिक पॉइंट्स दैट ऑलवेज हेल्पिंग देम। ओके, वो हायर क्यों करें, व्हाई दे शुड हायर, व्हाट आई हैव स्पेशल फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स, why, so your unique point, so you're just like working what you did so far and how you delivered to your client, that was appreciated, that was cutting cost, that was helping a lot for the company, for your employer, or for your just like other projects members. So these things, and apart from that, what you have unique, everyone have some specific unique. For example, I am the expert of performance tuning, you should be in one area, everyone have a unique point. So told them or explain in a video, okay, I am able to resolve problems with the help of this, with the help of this value, with the help of this task, or on this task I can add more value. So your unique value will help to understand, okay, how your USP will help to resolve their problems for their client problems. So these are the major points or the structure of video tuning.
Once you will record your resume, send in to us. We will overview, we will review, check okay what facts you are doing or missing, so we will suggest you. Okay, take first few 10 20 times shots. If you are feeling okay this is good, then send us. If you still think okay we need to re-record till that you feel okay this is the perfect, then send with us. And no excuses. If you want to become top 1 2 3 4 5%, you must be follow these basic ground rules, like your video resume, your paper resume, black and white. Your LinkedIn profile must be optimized. Your Naukri and other job postal profiles are up to date. These factors will stand out you from the crowded market, or among other job applicants. You will be just like away from that crowd. You always will be in demand if you follow these things. And I hope you got my point. Thank you.